तो हमारे साथ है आज शिवम। शिवम एक मास्टर स्टूडेंट है पर्ड्यू में। शिवम बताइए अपने बारे में कुछ, कैसे हाउ डू यू लैंड अप इन पर्ड्यू एंड वेयर आर यू फ्रॉम? तो I'm a master student here at the Purdue CS department और हम दोनों रूममेट भी है यहाँ पे। तो वो सब तो हाँ। तो मैंने अपना बीटेक बैंगलोर से आरबीसी बैंगलोर से किया। देन आई वर्क फॉर कपल ऑफ इयर्स एट जिंगा व्हिच इज लाइक वन ऑफ द लार्जेस्ट सोशल गेमिंग कंपनीज। उसके बाद या आई लैंडेड एट Purdue लास्ट फॉल 2022। तो अभी मेरा सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है। तो हाँ, दैट्स अबाउट मी। एज अ पर्ड्यू के बारे में तुम्हें क्या सुहावना लगा? यहाँ की फीस, यहाँ का करिकुलम, या कुछ और रीजंस जिसकी वजह से तुम पर्ड्यू में आए हो? तो जब मैंने अप्लाई किया था, सी सोर्सेज होते हैं राइट टू फिगर आउट किस कॉलेजेस में अप्लाई करना, टू गेट ए सेंस ऑफ कहाँ पे रैंक करते हैं डिफरेंट कॉलेजेस। तो मैंने एक तो CS ranking.org लिया जो कि तुम्हारा रिसर्च बेस पे होता है। ओ, देन वो, यूएस वो न्यूज। वही है ना जिसमें नंबर ऑफ रिसर्च पेपर और उनके हाँ साइटेशन के बेसिस पे हाँ होता है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो उसमें वो रैंक सिर्फ, वन पे कौन है उस रैंकिंग में? तो उसमें सब फील्ड्स होते हैं राइट। इट्स मोर अलाइन टुवर्ड्स पीएचडी राइट। तो उसमें सब फील्ड्स होते हैं, तुम सिलेक्ट करते हो। मतलब सिस्टम्स करोगे तो कोई ऊपर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर तुम सिस्टम्स करोगे, तो सिस्टम सिक्योरिटी ये सब करोगे तो शायद पर्ड्यू टॉप 7 में आता है। बट अगर तुम कोई और HCI करोगे, ML या कुछ करोगे, तो शायद वो नीचे आए। तो शफल होता रहता है, डिफरेंट स्कूल्स की डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्टीज होती है। तो ऐसे तो, बट अगर तुम सब फील्ड्स लेते हो और लास्ट के 5-6 साल देखते हो, तो पर्ड्यू आपका 12-15 उन सब के आसपास आता है राइट। तो उसमें टॉप पे ऑब्वियसली CME होता है, बट उनमें आपको वो भी देखना होता है कि उन कॉलेजेस का साइज भी बहुत बड़ा है राइट। उसका ओ, फैकल्टी ही, पर्ड्यू से बड़ा साइज है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नॉट फैकल्टी नंबर ऑफ नंबर? स्टूडेंट्स, इन टर्म्स ऑफ फैकल्टी। तो उनके एआई पे रैंक वन कौन आता है? देखना पड़ेगा मुझे, बट आई थिंक CME या वो सभी होंगे, लेकिन उनका ओके। डिपार्टमेंट इतना बड़ा है। मतलब उनका वो फर्स्ट पे आते हैं, वो और जो सेकंड पे आता है उसका सेकंड या थर्ड पे जो कॉलेजेस आते हैं, द डिपार्टमेंट बर्कले साइज इज बर्कले ऑलमोस्ट कहाँ पे आता है? यूसीबी वो भी टॉप रैंकर्स है? टॉप 5 में ही आता है हाँ। ऐसा क्या अ, तुम्हें पर्टिकुलरली लगता है कि इन यूनिवर्सिटीज में ऐसे क्या डिफरेंस है, नंबर ऑफ फैकल्टीज और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिस वजह से वो उस रैंकिंग में हाई है? See, that ranking is purely based on your H index, citations, and हम्म। citations. If you need higher citation, you need better prof. If you need better prof, तो वैसा हम्म। एरिया भी होना चाहिए राइट। तुम्हारा सिलिकॉन वैली या उन सिटीज में रख के तुम वैसे प्रॉफ्स को अट्रैक्ट कर सकते हो राइट। NYU का डेटा साइंस का हम्म। ध्यान लिखो वहाँ पे है, तो उसका ऑफिस वहाँ पे है, ही वर्क्स फेसबुक और इसके बीच में वो सब। ओके तो ओके ओके। वो लोकेशन डज प्ले रोल। और मतलब बैंगलोर में कितने साल रहे फिर तुमने? जॉब करी बैंगलोर में बैचलर्स के बाद, तो कितना ईयर्स इन्वेस्ट किया वहां पे? बिकॉज कोविड भी था, तो मैंने 1 साल अपना पुश किया था, ये तो 2.5 से थोड़ा थोड़ा ज्यादा। ऑनलाइन था ऑफलाइन था जॉब? तो मैंने इंटर्न भी वहां पे किया था, तो मैं ऑफिस ओ, गया था मतलब। बट मेजोरिटी 75% आई थिंक ऑनलाइन ही हो गया था मतलब वो सब। ओके। तो क्या काम हम्म। करते थे तुम? किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है? तो हमारे प्रोडक्ट राइट, इट्स गेम्स है राइट। तो पता नहीं लोगों ने सुना हो तो फार्मविल 2 एक टाइम पे पीक द मोस्ट प्लेड गेम था फेसबुक पे। जो फेसबुक नया नया लॉन्च हुआ 2007 में लॉन्च, 10-12 इन सबके पास राइट। फिर फार्मविल 2 आया, तो 2012 के बाद इट वाज द मोस्ट प्ले सोशल गेम फेसबुक पे। तो वो है। उसके बाद कोलैबोरेशन जो सब हुई, हमारे हैरी क्या पॉटर। तुम्हें क्या लगता है, मीन्स लाइक गेमिंग आई इंडस्ट्री मीन किस डायरेक्शन में जा रही है? किस मीन्स लाइक फ्यूचर ऑफ डायरेक्शन में। गेमिंग इंडस्ट्री क्या होगी, जैसे विद द कमिंग एआई एंड स्टफ, हाँ, चैट तो इस जीपीटी चीज में वो एंड ऑल दीस स्टफ्स? मैंने कहीं पे पढ़ा था कि मतलब हम पहले बोलते थे कि द फ्यूचर इज जस्ट ए, जब हमारा क्लिक कीपैड बेस्ड मोबाइल फोन्स थे, तो फ्यूचर इज जस्ट ए क्लिक अवे राइट। देन व्हेन यू मूव टू टच, इट वाज फ्यूचर जस्ट ए टच अवे। तो अभी तुम्हारा AR VR है, और ओके। न्यूरल लिंक, तो आप बोल सकते हो फ्यूचर इज जस्ट ए थॉट अवे, सॉर्ट ऑफ उस डायरेक्शन में AR VR। तो जैसे अब हमने क्रिप्टो भी हुआ आई मीन 1 साल पहले जो वेव था, तो गेमिंग वाज अ बिग यूज केस फॉर दैट राइट। वर्चुअल करेंसीज बना दो, क्योंकि सब कुछ वर्चुअल ही है राइट। लोग पैसे देते हैं,
फोर्टनाइट में स्किन खरीदने के लिए सब कुछ वर्चुअल है तुम्हारा। तो गेमिंग वाज अ बिग यूज, इनफैक्ट सो जैसे पहले ओपन इंस्टॉल। एआई के बहुत सारे गेम्स हैं, या ओपन एआई ने बहुत सारे गेम्स प्ले करे, मैं देखता हूँ। तो बहुत सारे गेम्स ऐसे हैं जो बीट हो चुके हैं बाय अ ह्यूमन और अ एजेंट, कंप्यूटर एजेंट। ऐसे तुम्हारा गेम बीट हुआ है? ऐसे एआई बीट कर सकता है तुम्हारे गेम को? एंड एन एआई एजेंट, एन एआई एजेंट। जैसे बहुत सारे गेम तुमने देखा होगा, कॉल ऑफ ड्यूटी और ये सब, जिसमें तो एक। गेम्स में डिफरेंस होता है राइट, उसमें प्लेयर वर्सेस प्लेयर गेम होती है। कॉल ऑफ ड्यूटी में तुम्हारे ओ, छोटे मैचेस है राइट, बट अगर तुम्हारे लॉन्ग स्ट्रैटेजी गेम्स होते हैं ओके। उसमें वैसे तो नहीं। लॉन्ग स्ट्रैटेजी गेमिंग, गेमिंग जैसे चेस, गो, नहीं इनमें वो तो तो एआई अभी ने छोटा बीट हो गया। कर ही दिया है ना। मतलब नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, इफ यू टॉक अबाउट अ गेम, the thing हम्म। which matters is the number of combination, permutation and combination, which may lead you to win the game in some or other ways. So अगर वो exponentially very high है, I don't know, गो से बड़ा exponentially in terms of permutation and combination, गो से बड़ा I don't know, chess, और गो में इस तरीके का हाँ, होता तो है हमने कि वो किया ना राइट, हमें बीट करना तो हमें चेस से स्टार्ट किया राइट। वो फेम्ड, आई फॉरगॉट उसका नाम क्या था। अह, जिसने कैस्परोव को बीट किया था, रशिया के क्या। कैस्परोव हाँ। को। हाँ रशा कैसे पहले उसी के साथ मैच हुआ था, तो उसके बाद फिर हमने जब चेस को कर लिया, उसके बाद वी वेंट ऑन टू गो। उसके बाद फिर हमारा वीडियो गेम्स का लिटरली हुआ, ओपन एआई ने जो किया। तो इट्स अ गुड यूज केस टू टेस्ट तुम्हारा एफिकेसी ऑफ योर मॉडल। So, in हाँ terms of future बट मैं technologies like AR, VR और AI, gaming industry इस डायरेक्शन में जा रही है कि more, to give more submersive experience हाँ and वो तो all. हो ही रहा है। अगर आप देखो पोकेमोन गो भी तो वही था, ए आर वी आर एसेंशियली था राइट। और आपका एप्पल का भी आप देख रहे हो धीरे धीरे पुश। इनफैक्ट अभी आपका एक Even साल पहले Facebook तक। metaverse, if you see Facebook metaverse, it's still हाँ बट वो related to some. क्रिप्टो, नॉट क्रिप्टो Uh, मतलब It, it's आपका like the objective वेब थ्री was में आ जाता है। is to beat Microsoft in the gaming industry. One of the objective of Facebook to have metaverse is to beat Microsoft is the one of the best in gaming industry with their आई consoles मीन and all hardware and stuff. So yeah. माइक्रोसॉफ्ट पर से नहीं है, मतलब अगर आप एक साल पहले देखोगे सब गेमिंग इंडस्ट्रीज को एक्वायर किया जा रहा था, तो माइक्रोसॉफ्ट वो सब ने भी किया ये सब। एक्सबॉक्स जो भी है, तो हमारी कंपनी को भी एक साल पहले एक्वायर कर लिया टेक टू ने, जो जी टी है और वो सब गेम्स बनाती है। उनका कंसोल में होता है, हमारा वेब और मोबाइल ऐप्स में होता है। बट हाँ मैं बोल रहा, वो ये बोल रहा था कि वेब थ्री का यूज केस था राइट। तो उसमें एक साल पहले हमारा उस डायरेक्शन में कंपनी बढ़ा भी, और हमने यूएस में टीम्स भी एस्टैब्लिश की गई थी जो कि वेब थ्री को एक्सप्लोर करे। बट मैं उसके बाद निकल गया जो भी है तो मैं देख रहा था इवन इन इंडिया राइट नाउ, दे हैव मिनिस्ट्री ऑफ गेमिंग, मींस लाइक दे आर ट्राइंग टू ओपन ओह हाँ। मिनिस्ट्री ऑफ गेमिंग एंड ऑल, and they are providing proper funds for that. Apart हम्म। from that, where do you see in the longer term this virtual reality in some or other way it will be helpful? So sometime I used to think, for example, right now the wars are like Ukraine, Russia wars, all other wars are, man to man combat and using weapons, high grade weapon, and all are strategy based basically. Is it possible हम्म। in future like they'll be like India based team and or Russia team or Ukraine team, and you sort out your issues onto the gaming environment or AR VR environment where you sort out your issue and whoever wins will be having more say. It means like it's like a very tangential thought, but yeah, such kind of stuff is very useful to have to reduce loss of life and all. It's like at the end of the day, the power projector will be the one who put peace onto the table. So yeah, let's see. Just a tangential thought. And what do you like about Bangalore? क्या वहाँ पे जा रहा था, तो मैं क्विंटेसेंशियल होके ट्रैफिक को ब्लेम नहीं करूंगा, बट क्या रीजन है बैंगलोर के ट्रैफिक का? मीन्स लाइक ऐसे क्यों है? मुझे एटलीस्ट आई वाज नॉट इन दैट पार्ट ऑफ द सिटी, तो मुझे कोई ऐसा इश्यू नहीं लगता है। मैंने कभी ट्रैवल में कभी इतना घंटा स्पेंड नहीं किया, बट ऑब्वियसली आई वाज इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ सिटी, तो मैं मेट्रोज और वो सब यूज करने को मिलता था। तो बैंगलोर में ऐसा अभी मेट्रो बन रहा है, तो एक सर्टेन एरिया में है और बाकी जगह पे जा रहा है। तो वो जो तुम्हारा जोक भी है राइट, रनिंग जोक है कि एयरपोर्ट बैंगलोर में नहीं है और बाहर है। तो बैंगलोर के बाहर है, 500 किलोमीटर दूर है बैंगलोर से. Or apart from that, the बट the thing is, I think.
nobody has expected Bangalore to grow like this. It's like one of the most, you know, हाँ exponentially growth city in terms of IT industry. Nobody have thought. Okay, people have thought in terms of 80s, 70s, in like terms of most of India manufacturing. unplanned. Most of Yeah. India is unplanned, right? आपकी No, कितनी no. cities हैं? If you चंडीगढ़ see, the जैसे city. manufacturing industry already exists at so many places, so people had some sort of strategies for those cities like Chennai. Okay, there was already manufacturing industry from so long. But for Bangalore, even nobody expected us to take lead in tech industry, due to which there was like exponential growth, and the cities were not designed as such. Do you know what happened with the Bangalore metro? There were only limited number of stations. So what happened? There was like some, I don't know, Bangalore Metro Corporation. They were mentioning like if you take work from home for a month, we will construct the entire Bangalore Metro. Okay. So people were asking when there was actually work from home for like 3 months or something like that. Why didn't you construct the metro at that point of time? Okay. And even the Sure. Uber prices and auto prices are very high. Bangalore Auto Wala, they are like memes on it. Bangalore Auto Wala, नहीं जाएगा. Rahul Subramaniam वो तो के वैसे भी होता jokes. है बॉम्बे में भी वो सब भी बट हम्म. बैंगलोर वेदर तो ऑब्वियसली है हम्म. बट व्हाट क्या डिफरेंस है तुम्हारे होम सिटी जम्मू और बैंगलोर में इन आई टर्म्स मीन ऑफ वो तो लाइक है मे बी बट आई क्या मीन तो डिफरेंस है उनको कम वो तो अभी छोड़ देता है कि जम्मू और बैंगलोर में क्या है बट इन टर्म्स ऑफ बैंगलोर व्हाई इज इट खाना खाने की चीज में क्या डिफरेंस है क्या जम्मू की फेवरेट डिश है जो तुम्हें पसंद आई नहीं पहले पहले हम बैंगलोर वाला करते हैं कि तुम्हें आपने भी तो काम किया राइट तो आपको क्या लगा सिटी के बारे में सबसे व्हाट डू यू लाइक अबाउट सिटी सिटी के बारे में मुझे मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आई लाइक साउथ बेटर देन नॉर्थ देयर आर क्यों सो मेनी रीजन फॉर दैट I think South is much more cooperative in terms of people to people connection. Even there is a disconnect between people due to the language लैंग्वेज barrier. But in Delhi and all, I have been living in Delhi, near Delhi for so many people are very aggressive. Okay. Ready to fight, honking for no reason. So there are some challenges. Then maybe due to the population and all, there are और द pollution हीट challenges. But I personally like South India because of there's other thing like less pollution, less population, better demographics, and even if you see the metro station, not metro station, particularly railway stations, much more cleaner. But yeah, but I would say in that way, South is much better. Food wise, I would say no, our North India is pretty decent, pretty good. And but yeah, if somebody would say me, okay, where you want to live? So I would say South India. ओके There may be like people to people opinion matters. So I came to know like recently there's like lithium is discovered in Raisi, Jammu district, something like that. रियासी राइट हाँ जम्मू से आई एम नॉट श्योर कितने किलोमीटर बट आई गेस 150 ऑफ किलोमीटर्स होगा वो तो हाँ वो मैं भी न्यूज़ पढ़ा कि Lithium हमारा discover हुआ है ना 5.9 million ton, something like that. If that is the exact number, we'll be like around fifth, sixth or seventh position हाँ in हाँ terms वी of जंप फ्रॉम नोवेयर टू टॉप 5 yeah. पुश होगा But the thing is, again, we have mines, but we don't have the capability to pure lithium. So we have to बट आज के ओपन वर्ल्ड में आई डोंट थिंक दैट वुड बी अ बैरियर मतलब इतना तो इफ यू कैन एक्वायर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो उस सब के लिए तो means like I think government is planning to have some industries. Those will be US based, not China based. Those will be US based industry. You have seen means like when there was a news related to 5.9 million tons of lithium discovered. The next day itself, the Ministry of climate change and something like that from US visited India related to this, and maybe there will be talk related to because US already has industry which can I mean they're also trying to shift their base out of yeah, China to India or something yeah, yeah diversification of French shoring okay yeah और बताओ और क्या आपके बारे में बात करते हैं तो
आप इंडिया आप भी बैंगलोर से, राइट? बैंगलोर में आए, यू आर डूइंग योर मास्टर PhD फ्रॉम IIC इन व्हाट डोमेन, व्हाट्स योर मैं स्पेशलाइजेशन? एरोस्पेस इंजीनियरिंग करते हैं हम। मेरा हाँ तो आप, मास्टर्स भी एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, पीएचडी भी एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, ओके मेजरली तो, बट स्ट्रक्चरल जब भी अभी मैकेनिक्स। आप, जब भी मैं आपको देखता हूँ तो आप एक लॉट ऑफ मैथ्स और ML वो सब करते हो, तो एरोस्पेस से यहाँ पे शिफ्ट कैसे आया और कितना डिफिकल्ट हुआ कमिंग फ्रॉम नॉन CS बैकग्राउंड टू लर्निंग ML, क्योंकि वो लिटरली इंटरसेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस लाई करता है। तो वो ट्रांजिशन कैसे किया और कितना डिफिकल्ट रहा और क्यों किया? डिफिकल्ट तो था इन द इनिशियल फेज। आई रिमेम्बर जब मैंने पीएचडी ज्वाइन किया था तो मेरे प्रोफेसर ने मेरे को दो प्रोजेक्ट्स दिए थे। एक था हम्म, एमएल बेस्ड, क्योंकि हमारी मैकेनिक्स बेस्ड कम्युनिटी में जो मैकेनिक्स करती है एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बहुत कम लोग थे, बहुत लिमिटेड लोग थे, या कोई था ही नहीं जो ये काम करता था, एमएल एप्लीकेशन हम्म। एंड ऑल। तो मेरे आप जब वो, व्हेन यू से ये काम करता था, व्हाट डू यू मीन, लाइक यूजिंग लाइक ML एज अ टूल टू सॉल्व योर aerospace specific problems? yeah, solving ML as a tool to solve aerospace specific problems Give me an related. example of one problem. One problem could be like whenever there is a like whenever an aircraft flies, so there Mm-hmm. is a very high tendency that there may be faults at so many component levels, subcomponent levels, and Mm-hmm. there are a lot of sensors to estimate that. Okay, but there are some challenges related to existing technologies or existing techniques. So we use those sensors data to develop machine learning and In terms of AI. problem, किस type का problem solve किया, Like for supervisor का? example, if you have, you can estimate the damage or Hmm. failure of any component way ahead in time. So what happens? The information goes to the pilot after it becomes critical. So with the help of data, machine learning, physics, we can estimate it much earlier. Like they'll be like, because they'll be like an artificial intelligence already processing the data and it's telling, okay, what is the fault, how is the fault, from where it is emerging, and what you can do to reduce that fault. So it's like much more an additional brain which is working, assisting pilot in some of the technologies. But to solve such problems, right, तुम्हारा डेटा तो बहुत कम होता होगा, राइट? क्योंकि कितनी बार प्लेन क्रैश होगा और कितनी बार वैसा डेटा एक्वायर होगा, राइट? तो हाउ डू यू सॉल्व दैट प्रॉब्लम? So we use, so the thing is, a lot of data is already condensed in the form of physics. If you see, all the physical equation represents those data in some or other ways, consolidated using Newton's law and all. So we use those kind of physical priors, physical information, and with the help of less data, with those physical priors, you can solve those problems. So even my thesis in that direction, like adjoining, or using data as well as physics to solve such difficult class of problems. We call them inverse problems. Okay, inverse problem. Got Inverse it. problem mathematically means from effects you find out the cause. So one of the example is given by one of the professor over here, Elias Bilonis, that best represents inverse problem. I used to give, if somebody asks me what are inverse problem, I used to give like this example, which he is given by him. So he say there is a swimming pool and there is this notorious guy on one of the corner of the swimming pool. Hmm. And so what happens? He pees into the swimming pool, हाँ, and आपने the बताया। swimming pool waters becomes yellowish. Now you haven't seen how it became yellowish. Now water keeps on getting yellowish, but there is a guy on another corner. He's saying who peed. Now you have measured. Okay, you have seen from your eyes. Okay, somebody peed, but how will you estimate who peed? From Hmm. which corner it peed? So what you require is you need concentration along the entire swimming pool. You need water flow. So with help of these things, you are going back in time, finding out the Hmm. cause of that. So this is one of Hmm. the best example of inverse problem. You go back in time to estimate the cause of it. The more farther you go back in time, the more difficult the problem is. For example, some people say, like in cosmology, they Hmm. estimate something using, you know, Hubble telescope, James Webb telescope, and they try to predict what happened millions of years ago. Hmm. It becomes much more challenging as you go back in time. As you keep going back in time, the challenges of, like, mathematically we call multiple solutions and all those arises. So that is the part of my PhD thesis, to solve those kind of problems.
Hmm. Got it. So, this is you're graduating this year, right? Most probably this year. Let's see. Okay, got it. So, पहले तो my question would be कि uh, for a PhD student who is in India, right? You are right now on a grant or fellowship or something. You came here, right? Yeah. So your path, I'm trying to figure out what are options you could have, right? If you graduate from a good institute in India, or if you want to transition outside, there's apps many people here are doing, right? They are transitioning into a J1 role and then trying to get a postdoc here, right? So what are the options? आप अपना बोल सकते हो, right? For your batchmates who are graduating out of IISc, uh, what kind of jobs or research roles you can do. So many Uh, people like in India, mm, or even if I compare ISC with Purdue, mm. the capability which ISC students So in have. terms of for an Indian student who's graduating out of IISc, PhD student, Hmm. what kind of jobs you can get into? Like one thing is you can go into academia वापस, right? Prof. You can become a prof, or you can go into a research role, right? यहाँ पे भी होता है. Or you can move abroad to get a Yeah. postdoc. But to do that, it's usually difficult, right? If you have not done Yeah. for you, it might be easier because you've already moved here on J1 visa, you have connections and all. Without that, is it possible or Yeah, because a lot of people from those who graduate from ISCs, IITs, they do PhD, oh sorry, they do postdoc over here, they come to mm, US or Europe, they do postdoc over here, and for them, their main objective is after having a postdoc, they should have a faculty position in India. That mm. is their first objective. So, to get a postdoc here, do you need to have any kind of like for you? You already have an experience here in the US, right? You spent 1 year here. So could someone who did his internships or did his research work in India likely get a postdoc here in US? Yeah, it's a very high probability. A lot of people do Oh, that. It at the end of the PhD, it matters. It only matters the quality of the work mm. and availability of the postdocs and all. So So it's a lot of people in do terms of that. quality, what kind of conferences should they aim for? So आपका भी, right? Uh, your work is at the intersection of that, right? You're using ML and also do you go, what kind of conferences do you go for? Are they aerospace specific or CAS, Neural IPS, what's up? Now, for me, I usually go to the conferences where which is like majorly domain specific, but people in my domain a little bit related to signal processing. So that community, EE community, is like much more, I would say, much more intersection of my work related to What is those the most communities. prestigious university, what is the most prestigious conference for the kind of work that you do or your prof does? For us, there is a conference in Stanford, International Workshop on Structural Health Monitoring. There is this 4 year workshop. After 4 year, it comes Uh, US Congress on Computational Mechanics, something like that. So there are so many conferences over there. But conference helps you to build connections and all. okay, So I yeah. thought you would be going to CS type का, Neuro IPS वो सब चीजें. No, NIPS, ICML, CVPR. It's like हाँ. you should have a contribution to the machine learning community. I have contribution to my domain, aerospace engineering, mechanical Hmm. engineering, civil engineering. So for them, my contribution is in this direction, but a little bit I'm shifting towards more from domain specific to much more CVPR, ICML. Most probably you will see one of the paper in top 5 conferences in 1 or 2 years. Hopefully, Let's hopefully, see hopefully. for हाँ. this. Yeah, so this But is the then same. for that to happen, shouldn't majority of your work be in ML? But ML is just a means to an end for you, right? It's just a tool that you Right use now, to it's solve. just a tool for my work, Hmm. but I do consider, pushing the boundaries in the ML domain itself. Hmm. So it depends. Means like it means mathematically doing something in the machine learning community, or it could be like adding some sort of new contributions into the machine learning community. My research is more towards physics informed machine learning, but I'm like much more interested in generative models and all. So generative models have capability. If you see ChatGPT is a language-based generative model. So what are your experiences with the ChatGPT? What do you think? What all experience you have? Do you think ChatGPT is like capable of? Right now, there is a lot of hoax about it.
after some point of time it will get saturated and people will see, yeah, it's okay-ish. I mean, there is obviously something better will come up, but it's something new. Yeah, at least in terms of what's been exposed to the public, right? Democrat, like Jan LeCun, right? When this ChatGPT thing came out, Sam Yeah. Altman, the CTO of, I think CTO CEO of ChatGPT, went on to tweet about it and all those things. Jan What LeCun did came out John and Lagoon tweet it? Like, so he works for Facebook, right? So he came hmm, out and said that Google and Facebook also have much more powerful stuff, right? They also, but they will not obviously reveal it for ethical and all those reasons. hmm, Obviously because yeah, Google is established brand, you have millions of people using it, right? Billions of people yeah. using it, so you can't just even changing one thing will take a lot of approvals and time and all, And right? And even they in, don't. yeah, even in ChatGPT, if you see, it's a language-based model. It has cracked some Google interview. It has cracked some Wharton School MBA exam. So it's like, it means our educational system has some flaws. A lot of people I see online like ban ChatGPT from academic environment. What is the objective of learning something which is already available online? So there is it. I was reading this article how ChatGPT has shown the educational administrators you know capability of the education system. That directly means like if a chat gpt kind of framework can give you a in the exam, what does this mean? It means it's just based on existing knowledge and we are not able to provide that also in the school. So I think educational system need to change some or other ways. A lot of people believe that it's right now we are like eating a lot of stuffs from the books and all. Yeah. So there could be changes future in the education system in some or other ways. It should be more like a lot of people say this also like chat GPT, AI, these kind of stuffs comes, then the job will be lost and all. It's been happening. Job loss. It's been a trajectory of human civilization. When there was industrialization, people stopped working from their hand and used machines. So definitely there will be job loss. Humans should be able to adapt with the technologies. I think they should be much more innovative instead of doing automation kind of work. So the HRs and all these people who are regularly into automated services, even if you see right now, if you call FedEx, there'll be an agent talking to you, properly an agent talking to you. It means the automated work sooner or later, 5 years or 10 years, they will be gone. We need people with more innovative mindset. It's not necessary to have PhD level of education, but we should have much more, I would say, innovative kind of thinking from beginning. That's how things will process. And the hoax about AI taking the job is exactly true. Like Elon Musk has also said, like if Mhm. we are not able to adapt ourselves, definitely AI used to can be able to take over human civilization in some or other ways. It start manipulating our behaviors and all, and we will end up nuking each other in some or other ways. Yeah. So ChatGPT is like right now they are making ChatGPT. I think Microsoft has already integrated it into their framework. I mean, I think But Elon Musk was saying, I opened open AI for the purpose of open research and all. Now Microsoft is using it for their own benefit. Doesn't make any sense. They have invested $10 billion into it. They may be having, when they were investing, they may have thought something like, okay, we will integrate into our framework. Right now, if you see Bing, it's like the popularity of Bing is increasing because of their chat GPT capabilities and all. yeah, Yeah. people are moving on to that. Now the jokes around Internet Explorer, after like these jokes around Internet It's Explorer being redemption. after 3 days, congratulations India too for winning their second World Cup. It's like that was Yeah. in 2011 and there was a meme in 2012. So when the incident happens, so there's meme Uh, around Internet Explorer. and there are those memes also, right? ChatGPT is Internet Explorer's redemption. Yeah. Uh, There's memes around like on the back end of ChatGPT. Some Indian people are sitting and typing the results. There are memes mhm. around that also. Yeah.
So it's quite funny. AI is taking out, in every domain, whether it's cybersecurity and all. I think it's gonna grow. A lot of people who, not much, I would say, connected to AI community or automation community considers, okay, it will be like, it's kind of a, I would say, they usually say it's kind of a, like, what do you call it, kink, a little bit. People are feeling, okay, it's much more capable, it's gonna die like AI winter and all. I don't think. What's your perspective on that? It's gonna die. The level of automation going on every around, means like even Zoom on everything, means like everybody is doing some sort of automation in some or other ways using data of the even recommendation system. I don't think it will saturate soon. It may go like for more than 50 years. There will be saturation in terms of its capability, AGI and all. Let's see. What about, means like you were applying for internships and all? What's going on in the industry? There are lot of layoffs and all. What do you think going on? What are the statistics? How many, which companies are laying off? How many number of people and all? Most of the big tech, like there are different industries, right? So most of the big tech, yeah, companies in big tech are laying off. So essentially वही हुआ, right? Everyone was inside. तुम्हारा peak हुआ, ये DAU सब कुछ, right? Peak हुआ Stocks. मतलब? I mean DAUs, right? Daily active users, Zoom and everything shares went up. उसके बाद फिर it was supplemented further तो by क्या growth उनको, में. उन्होंने ये सोचा था क्या कि सोचा कोविड रहे खत्म they होने के thought बाद ये बढ़ेगा? मेंटेन होगा, राइट? हाँ, अच्छा। थॉट वही था कि इट वुड एटलीस्ट बी मेंटेन्ड, राइट? उतना एंगेज होगा क्योंकि काफी एक साल था ऑलमोस्ट, तो एंगेजमेंट रहेगा, स्टॉक्स उतनी हाई रहेंगे. बट ऑब्वियसली फिर तुम्हारा क्रिप्टो विंटर भी आया, तो जनरल आउटलुक नेगेटिव हो गया उस टाइम से, फिर ग्रोथ भी सस्टेन नहीं हुई. तो ले ऑफ होने लगे. एंड और अगर तुम सैलरीज देखो तो दे हैव बीन इन्फ्लेटिंग आल्सो. तो आई जस्ट फील इट्स अ गुड एक्सक्यूज जिसको गूगल का जैसे प्रॉफिट हो रहा था. बट अगर तुम्हें इफ यू वांट टू ट्रिम सम फैट, दिस इज अ गुड way to do that, right? No one will come after you. अगर तुम out of the blue या। Facebook अगर 15K कर देता है तो हम्म। रिपोर्टर्स एंड तुम्हारा सब बात पीछे आ जाएगा. बट ऐसे 20 कंपनी करती है, एक और कंपनी करेगी तो हम्म। कोई बोलेगा नहीं. तो वो भी चलता है. तो वैसा ट्रेंड है, तो हो रहा है. मुझे लग रहा है कि सत्य नडेला जब इंडिया में आए थे तो ही सेड स्पेसिफिकली लाइक फॉर 2 years दे विल बी लाइक दिस, पीपल विल बी, दे विल बी मोर ले ऑफ्स इन डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज. ट्विटर ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया भाई. 1/4 तो उन्होंने 3/4 तो लोगों को भगा ही दिया है उन्होंने. कैसे काम कर चल रहा है भाई वहां पे? हाँ, वो भी एक प्रेसिडेंट सेट किया, राइट? आई थिंक आई वाज रीडिंग सम ट्वीट और समथिंग, तो उसमें वही लिखा था कि if Twitter succeeds, this might signal that हाँ. you don't need as many people to No, still that is run the true. I corporation. think that is true. Means That like is true. because of the availability of huge amount of funds, so there is relaxation related to number of people they are hiring. If you see on in other industries, manufacturing and other sectors, they don't have that much relaxation related to the number of people they hire. They have Hmm. specific jobs, they work 9 to 5, but in I come to know, means like in Amazon, even in not in Amazon, but generally in Google, and they hire a lot of good people, but the amount of the work they extract out of them is not that much. So Twitter gonna No. prove it. I think I believe Twitter gonna prove it. Like they still working. They have new, impressions, number of views on your tweet. They have this new stuffs coming out, and Elon Musk has posted one picture, like with his team. There was Indian and Chinese in that picture only. I think a Right. lot of हाँ. people from US, they don't want to work from more than 9 to 5 and something like that. I think. I do हाँ. think immigrants work much more harder than other Well, people. you could. Culture is one reason, and but Uh, they have to. They don't have as much. They don't have as many options, right? You have to otherwise leave the country in 60 days. So circumstances भी तुम्हें force करती है, right? You can't. Culture, I like India and China, I would say. There's similar culture, like a lot of competition. They have Gaokao, we have IIT-JEE. So it's like, similarly, Gaokao is much more difficult, as people say, than IIT-JEE, but IIT-JEE has less acceptance rate. So in Mm. that term, like, our cultural things teach us a lot of stuffs. Like, there is a misconceptions, like, Indians are very good with maths. Just have you seen those memes?
those YouTube channels, they go onto the streets of India and they say multiply 27 by 3. And there's this guy who is like, he's saying, directly he's saying 81. Wow, wow, what a mathematician. Dude, multiplying 27 by 3, everybody can do in India. Even our moms can do. 27 गुणा 3. So it's so obvious. Means like multiplying the number and addition should not be that much challenging. It's not real maths. Actually, everything descend down onto those numbers. But बट there's a difference, right? यहाँ के वहाँ के culture में यहाँ पे most people are pushed into engineering क्योंकि that's statistically most likely to make you rich, right? तुम्हारा poverty से escape करने का एक ही ladder है तुम्हारा, which is education. Otherwise इतना avenues नहीं है. मतलब अभी 30 साल पहले तो बिजनेसेस भी नहीं थे. 1990s में हम ओपन अप हुए राइट मार्केट्स को लेके. यूएस में वैसा नहीं. यूएस में आप देखोगे तो मूवीज के थ्रू या पॉप कल्चर में भी कॉलेज नहीं जाना एक्सेप्टेबल सॉर्ट ऑफ होता है. पूछते हैं कि आर यू गोइंग टू कॉलेज, ऐसा राइट. लोग डिप्लोमा करते हैं पोडी में. मतलब कई कॉलेजेस में तुम्हारा डिग्रीज होती है, वो सब डिप्लोमा स्कूल्स होते हैं. बिजनेसेस होता है राइट. कैब ड्राइवर से मैं आई टुक एन उबर, तो उसमें द कैब ड्राइवर ही डिड एन एमबीए फ्रॉम आई थिंक पर्ड्यू और कहाँ पे समवेयर. कहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे? I mean, ओ, yeah, and he was driving Uber. I mean, ओ, normal people can also drive Uber. ऐसा कुछ वो negative connotation है, but उसने कार फ्रेग्रेंसेस का बिजनेस स्टार्ट किया at a very ओ. late age, like 50-60. तो ऐसा बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप ये सब का बहुत ज्यादा है राइट इन यूएस में. I think entrepreneurship and all these things is related to the prosperity also of the nation. So what happens in हाँ India प्रॉस्पेरस right है. now? हाँ मैं Yeah. इसलिए हाँ उसमें आ रहा था कि इंजीनियरिंग तो आपको लेना पड़ता है राइट. Hmm. मेजोरिटी पीपल के लिए इंजीनियरिंग और बिजनेस तो बाद में आता है. इंजीनियरिंग और मेडिसिन इसलिए भी है. एक तो ठीक है आपका सोशली वो एक्सेप्टेबल है, वो उसके पॉजिटिव कॉनोटेशंस है फिर कल्चर में वो सब. उसके अलावा मेन है कि आपको वही दो करियर्स है जो जिसमें पैसा है राइट. मूवी Yeah. क्रिकेटर बनने में कितनी बड़ी इंडस्ट्री है राइट. Hmm. वो सब नहीं है, बिजनेसेस नहीं थे Bollywood, है नहीं थे cricket, or राइट. engineering. हाँ और वो है तो पेरेंट्स की तरफ से भी वैसा पुश आता है राइट. तो इतना सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है आर्टिस्ट बनना या ऐसा कुछ बनना. But with time, I think things कुछ will नहीं gonna है. change. Things will change with time. आई मीन फाइनेंशियली जैसे हम स्टेबल होंगे हाँ तब हाँ. So ये stages है प्रॉस्पर. human civilization का, I think that has happened to that had happened to India, or the land. I would say the land happened when we were at the civilizational peak. So ऐसा होता है. Innovators and breakthrough comes from a society which is prosperous. Okay, so what happens even from prosperous people, Isaac Newton and those people were very rich. So क्या होता है कि they don't have to care, they don't earn. So when your profession, like intellectual profession, when it's linked to your job, it's very difficult to come breakthrough out of it. If you're working for money, it's very difficult to get, to get a breakthrough and that much big innovation out of it. So that happens. Means like right now we are coming from, a lot of people are second generation or first generation into the cities doing job. Right now, if you see startup boom is going on in India, more than 75,000 startup even in Shark Tank. That's pretty good. So आजकल वही there बिग will बॉस be a कर रहे हैं. stage when people will realize, like when people will be prosperous, a lot of people will be prosperous, then they are innovators. Then the country becomes innovator, like US, right? They are very prosperous. So they think about innovative solutions and all. Everything which comes out of anywhere in India, like even in Shark Tank. Shark Tank is a concept which started in US. So yeah, I would say आई मीन यूएस में नहीं होता वो. एक्चुअली यूके से हुआ. Australia. Okay. नहीं ड्रैगन्स UK, डेन वो UK, सब. UK, UK is also like very prosperous in terms of, if you see their GDP per capita is more than 50,000, US is 60,000. Yeah, people are rich. So yeah, so आई that मीन या तो matters. तुम्हारी इन्वेंशंस नेसेसिटी से आती है राइट. Yeah. गरीब देश में तुम्हें समझ कोई ऑप्शन नहीं है. यू आर इन अ मिजरेबल सिचुएशन, तुम्हें निकलना ही है तो तुम मींस ढूंढते हो वो सब चीजें. But I या don't फिर think तुम in tech it is possible. Misery and all, it's possible. You're right in some other ways, but I think in terms of tech, if you talk about tech innovations लेट and मी all, कंप्लीट. yeah. आप या तो आपको उससे आता है या तो आपके सर्कमस्टांसेस वैसे हैं या फिर आपके पास फ्री टाइम है राइट. यू आपके बेसिक चोर्स हो चुके हैं तो आपके पास हाँ, फ्री टाइम है. क्रिएटिविटी वहां से आती है राइट. अगर आप that's दिन true. भर खाना स्ट्रगल्स
बच्चे की फीस स्कूल वो सब इन सब में बिजी हो, यू डोंट हैव फ्री टाइम टू indulge in creative endeavors, right? आप मगर बस अगर तुम टाइम एक चीज देखो, इवन क्रिएटिव endeavors, if you talk about innovation startups and all, वो American नेसेसिटी का इन्वेंशन सबसे मतलब सबसे बड़ा आप वो ये बोल सकते हो, इंटरनेट बोल सकते हो। ज्यादातर आपके जो हम टेक्नोलॉजी देखते हैं, दे आर क्रिएशंस ऑफ वॉर, राइट? हमारे सुपरसोनिक जेट्स ये सब या वर्ल्ड वॉर 2 उन सबसे, इवन मटेरियल साइंस में जो हमारा काफी कुछ हुआ है, राइट? स्पेस रेस में से भी जो निकला है इंटरनेट कम्युनिकेशन की, तो वहां से वो चीजें निकली है। हाँ मगर आई थिंक if we let's go towards startup and all, startup culture in US is totally different from India. If you see startup culture, the selling American dream is coming out of garage, a big industry. This is the Indian dream. If you see, and that is American dream. Indian dream is like a garib ka bacha getting that much. You know, APJ Abdul Kalam is we see from a village. He came out and he became prime minister, sorry, president, and he has done a lot of stuff for India in terms of missile technology and all. This is how they portray in Indian media, like a garib bacha निकला और ये सब किया। यूएस में वो डिफरेंट टोटली अपोजिट है। गैराज से एक लड़का गैराज में उसने कंप्यूटर बनाया, वो था, बाद में बिल गेट्स बन गया। इट मीन्स दैट डायरेक्टली दोस्त टू स्टोरी डायरेक्टली टेल्स यू अबाउट द प्रोस्पेरिटी डिफरेंस। हमारे वहां गांव से निकले गरीब के बच्चे निकल रहे हैं, इनके वहां ऑलरेडी भाई तुम्हारे पास घर है और तुम्हारे पास गैराज भी है, तो पहले से तुम प्रॉस्परस हो। तो डिफरेंट डेफिनेशन फॉर डिफरेंट कंट्रीज, हाउ दिस सेल इन द सोसाइटी एंड ऑल, जो मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। सो स्टार्टअप कल्चर आई थिंक इंडिया, व्हाट डू यू थिंक इंडिया बीइंग, क्या इंडिया चाइना के जितना मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाएगा? मैन्युफैक्चरिंग आजकल हब। तो यही चल रहा है ना, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। क्या कोई चाइना की चाइना को चैलेंज कर सकता है इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग? लोग अभी उसको बहुत हल्के में लेते हैं। चाइना का मैन्युफैक्चरिंग हब इज लाइक एवरीथिंग। हाँ, मैंने वो पढ़ा भी था कहीं पे कि 2000 2010 2012 के आसपास, जब देयर वाज अ पीक ग्रोथ हमारा चाइना का इन्फ्लुएंस में भी और ग्रोथ में भी, उस टाइम मैंने कहीं पे पढ़ा था कि 1 या 2 साल में चाइना ने जितना कंक्रीट यूज किया था, दैट वाज इक्विवेलेंट टू जितना यूएस ने 10-20 साल में यूज किया था। तो इतना ज्यादा हुआ था उस टाइम। और आई डोंट थिंक इंडिया में इतना इजीली हो पाएगा बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन हाउ दे ऑपरेट, राइट? इतना ब्यूरोक्रेटिक टेप है, वो सब है, हाँ, तो देयर इज ब्यूरोक्रेसी चैलेंजेस आप डेफिनेटली, फोर्स नहीं कर सकते। हाँ, बट आई डोंट नो मैन्युफैक्चरिंग उतना रैपिडली इंडस्ट्री। नहीं होगा, बट मतलब रैपिडली नहीं होगा, हो सकता है, बट उतना रैपिडली नहीं होगा, बट वही कंसिस्टेंट रहना नहीं नहीं, पड़ेगा अभी ताकि। हमें ये देखना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग इंटेंसिव जॉब द चाइना प्रोवाइड्स इज ह्यूमन इंटेंसिव। विद द अपकमिंग टेक्नोलॉजीज, रोबोटिक्स एंड एआई, वो चीज ऑटोमेट होंगी, लोगों की कोई जरूरत नहीं है। तो मुझे लग रहा है इंडिया मैन टू मैन कैपेबिलिटी नहीं कर पाएगा। रोबोटिक्स और एआई टेक्नोलॉजी आने की वजह से दोज मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स विच चाइना डू विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन लेबर can be done later on with the help of AI. That's why that's why one of the second most investment in AI is put by China itself, because they know मैन्युफैक्चरिंग इंटेंसिव जॉब अभी ह्यूमन लेवल कर रही है, फ्यूचर में रोबोटिक्स और एआई करने वाली है। इंडिया को, मुझे लग रहा है इंडिया को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। न्यू टेक्नोलॉजीज, इनोवेशन। हम मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन सकते, बहुत मुश्किल है चाइना से कम्पीट करना। हम चाइना के लेवल पे नहीं पहुंच सकते, बट मैन्युफैक्चरिंग लेटर ऑन विल गेट सैचुरेट बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल दे कैन एम्प्लॉय, जो उनकी पावर है। अभी उनकी पावर आती है, लॉट ऑफ पीपल गेट देयर जॉब फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सो देयर इज लैक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। वही लोग चीजें खरीदते हैं, तो ऐसे साइक्लिंग नेचर ऑफ इकोनॉमी बनती है। तो इंडिया को आई थिंक इनोवेटिव सॉल्यूशंस की तरफ जाना चाहिए। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग जरूरी है, हमारी वॉर लाइक सिचुएशन नहीं होनी चाहिए कि हमें दूसरे से इंपोर्ट करना पड़ रहा है वॉर लाइक सिचुएशन में और क्रिटिकल सिचुएशन में। सो मुझे लग रहा है कि इंडिया को ध्यान देना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रिटिकली हाईटेक कंपोनेंट्स। यूएस ने इसलिए, यूएस डोंट केयर अबाउट चाइना बीइंग मैन्युफैक्चरिंग हब बिकॉज दे मैन्युफैक्चर सम इजी स्टफ्स, हाईटेक वेपन्स, हाईटेक, एवरी हाईटेक थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय यूएस। हमें भी उस डायरेक्शन में जाना चाहिए, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग। आई थिंक let's see how it goes. Things are happening at a okayish pace, I would say.
अभी मे बी लेट्स सी क्या होता है इस राइसी लिथियम डिपॉजिट्स का। एक्चुअली इंडिया ने एक प्रपोजल दिया है कि बाहर की कंपनी यहाँ पे लगा सकती है प्यूरिफाई करने का प्लांट, बट दे नीड टू बी मेक इन इंडिया, दे नीड टू हायर इंडियन एम्प्लॉयज। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो सीखेंगे और लेटर ऑन अपनी कंपनी खोलेंगे। तो इंडिया का ये प्लान है। हाँ। ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है वो तो रहता ही हाँ, है। सॉर्ट ऑफ ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। हाँ, खत्म करते हैं, यहाँ पे खत्म करते हैं। सो ये चैनल चलता रहेगा, ऐसे इंटेलेक्चुअल डिस्कशन आपको सुनते रहने को मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट लोगों से। हाँ, और this is day zero, तो we are still trying to figure out। तो या अभी मतलब to touch upon अभी तक हमने जो भी किया है, राइट, और फॉरेन पॉलिसी लेट्स सी, हमारा अपने साइंस एक्सपीरियंसेस। टेक्नोलॉजी यू विल लर्न अ लॉट, you can हाँ, engage with us in YouTube महिंद्रा का comments and पर्सनली योर व्हाट द कंटेंट वी कंज्यूम और आपका जिम का ग्रोथ भी, राइट, आपने yeah, कितना there's a lot of 10 things to 15 talk about. Okay, I stay mean just connected. document stuff। Yeah, see you. Cool,